वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। तो यहाँ पर आज हम आपके सामने जो है वो एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि आपके हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि है आपका ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के आपके जो है कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे एमसीक्यूज। ठीक है, और भी काफ़ी सारी एमसीक्यूज की अलग अलग टॉपिक्स की वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। आप जो है हमारे चैनल पर एक बार विजिट करके आप प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, Jkssb करके हमारे जो है चैनल पर प्लेलिस्ट है एक। ठीक है, उसमें आपको जितनी भी सारी वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएंगी। अदरवाइज़ आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा जिससे आप बाकी वीडियोज़ को असेस कर सकते हैं। उस पीडीएफ का, उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपके हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जिसमें कि आपको एक्सप्लेनेशंस दी रहती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका आज का टॉपिक है हमारा ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ओके, देन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर एन इंडियन वुमेन। ठीक है, अब ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग देखें इंडियन इसलिए स्पेसिफिक रखते हैं हम क्योंकि इंडियन नर्सिंग जो है वो कंटेंट अलग से होता है और जो बाहर की स्टडी होती है वो अलग से होती है। ठीक है, अलग अलग जो है वो माइनर सा जो है वो रेशो में, नंबरिंग में जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, इसलिए हम स्पेसिफिक जो है वो उसी को मेंशन करते हैं। ठीक है, देन जो है वो आपको रिकमेंडेड वेट गेन कितना हो जाता है, वो हो जाता है आपका 11 to 16 kg। ठीक है, दिस रेंज हेल्प इंश्योर अ हेल्थी प्रेगनेंसी एंड बर्थ आउटकम्स। ओके, 11 to 60 kg अगर प्रेगनेंसी के टाइम में वुमेन का वेट बढ़ जाता है तो उसको क्या माना जाता है, एक हेल्थी प्रेगनेंसी और उसके जो है वो हेल्थी बर्थ के जो है वो आउटकम्स माने जाते हैं। देन हम क्वेश्चन नंबर 2 की यहाँ पर बात कर लें आपके सामने, विच पोजीशन इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट ऑप्टिमल फॉर द लेबर एंड डिलीवरी। तो कौन सी पोजीशन में जो है वो आपकी मोस्ट ऑप्टिमम मानी जाती है लेबर और डिलीवरी के टाइम में, तो आपकी मानी जाती है द अपराइट पोजीशन। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इज कंसिडर एज द मोस्ट ऑप्टिमल फॉर द लेबर एंड डिलीवरी। इट इज प्रमोट्स टू द बेटर ब्लड फ्लो, एनकरेज पेल्विक ओपनिंग एंड फैसिलिटेट द मोर efficient delivery. Then question number 3, which vaccine is routinely given to pregnant women टू प्रिवेंट टेटनस। तो कौन सी वैक्सीन दी जाती है, आप सबको पता है टेटनस से प्रिवेंट करने के लिए टेटनस टॉक्साइड जो होता है आपका जो है वो रूटीन में दी जाती है। एक जो है वो आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो टेटनस दिया जाता है। ठीक है, देन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द नॉर्मल फीटल हार्ट रेट ड्यूरिंग लेबर। तो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट क्या होना चाहिए, तो वो आपका होना चाहिए 110। ठीक है, 110 160, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। डेविएशंस फ्रॉम दिस रेंज में इंडिकेट फीटल डिस्ट्रेस। अगर इससे डेविएशन होती है, अगर इस जो है वो आपकी जो है वो हार्ट रेट ऊपर नीचे होती है, ठीक है, आपका अगर ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर नीचे जाता है, 110 से आपका 120 130 जाता है, 160 से जो है आपका 70 या 80 जाता है, तो उसको हम फीटल डिस्ट्रेस इंडिकेट मानते हैं, उसको हम कंसीडर करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्री मैच्योर सेपरेशन फ्रॉम द प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्रीन वाल। तो क्या बोलते हैं हम उसको, प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एबोर्टियो इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, डिस्क्राइब एज द प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्राइन वाल इज अ प्लेसेंटा एबोर्टियो, इट कैन लीड द सिग्निफिकेंट मैटरनल एंड फीटल कॉम्प्लिकेशंस। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर इन इंडिया। तो वो है आपका राइट आंसर इज ऑक्सीटोन। ऑक्सीटोन इज कॉमनली यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर इन इंडिया, इट हेल्प्स स्टिमुलेट यूट्रीन कंट्रैक्शन एंड इनिशिएट द लेबर। ठीक है, जो कि आपका ऑक्सी टॉक्सिन है वो हेल्प करता है किसमें, आपका लेबर में। ठीक है, देन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। स्लो आज मैं थोड़ा बोलने की कोशिश करूँगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि काफ़ी फास्ट बोलते हैं, थोड़ा स्लो बोलिए ताकि जो है वो वीडियो लंबी भी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है वो थोड़ा स्लो रखिए। ठीक है, देन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वो आपका क्या है, वो है आपका 200 mg ऑफ आयरन एंड 400 mg ऑफ mcg ऑफ फोलिक एसिड। ठीक है, recommended folic acid supplement during pregnancy is 200 mg of iron, 400 mcg of folic acid, help to prevent anemia and support fetal development is the right answer. Okay, then question number 8, the average duration of first stage of labor in premigraviots। तो वो क्या है आपका 12 to 14 hours। ठीक है, the average duration of first stage of labor in premigraviots women in their first pregnancy is 12 to 14 hours, it may vary common individuals। ठीक है, ये वेरी करता है अलग अलग इंडिविजुअल्स में, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, 14 से 16 हॉर हो सकता है, 12 से 11 हॉर हो सकता है। ठीक है, देन विच पोजीशन इज़ रिकमेंडेड फॉर वुमेन एक्सपीरियंसिंग अ पोस्टपार्टम हैमरेज। तो
The lateral position is the right answer. Recommended for the woman experience of postpartum hemorrhage. It helps to prevent spine hypotensive syndrome and improves blood flow. Then question number 10. What is the common screening test used to identify gestational diabetics in India? तो हम क्या है जो टेस्ट जो है वो कंडक्ट करते हैं जिससे कि हमें गैस्टेशनल डायबिटिक्स है अगर पेशेंट को तो वो पता करते हैं, वो है द ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT, जो है इस कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई गैस्टेशनल डायबिटिक्स इन इंडिया. इट इन्वॉल्व मेजरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल एट स्पेसिफिक इंटरवल्स आफ्टर कंज्यूमिंग अ ग्लूकोज सोल्यूशन. ठीक है, क्या है वो? OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट. Then question number 11. What is the most appropriate nursing intervention for a woman experience a prolapsed umbilical cord? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. प्रिपेयर फॉर एन एमरजेंसी सीजेरियन सेक्शन. ठीक है, सीजेरियन जिसमें कि आपका ऑपरेट होता है. द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर वुमेन एक्सपीरियंस अ प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर एन एमरजेंसी सीजेरियन दैट इंश्योर प्रमोट डिलीवरी एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ बेबी. ठीक है. देन व्हाट इज द रिकमेंडेड इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसीज फॉर ऑप्टिमल मैटरनल एंड नेनोटैरल हेल्थ? तो वो आपका कौन सी होनी चाहिए, कितना टाइम पीरियड होना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए एक प्रेगनेंसी से दूसरी प्रेगनेंसी के बीच में? जो है वो नेटरल हेल्थ का मैक्सिमम आपका 2 years का गैप होना चाहिए. सफिशिएंट टाइम बिटवीन प्रेगनेंसी अलाउ द बॉडी टू रिकवर एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. देन क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एनेटल केयर? तो प्राइमरी पर्पस क्या होता है आपका? राइट आंसर इज टू मॉनिटर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द fetus. Primary purpose of antenatal care is monitor the growth and development of fetus and ensure the well-being of both the mother and baby. Then question number 14. What is the maneuver is performed to resolve a shoulder dystocia during delivery? Option A is the right answer. MC robot maneuver. MC robot maneuver is performed to resolve the shoulder dystocia during the delivery. It involves hyperflexing the mother legs towards her shoulder. Okay, then question number 15. What is the recommended vaccination schedule for hepatitis B vaccine in newborn babies in India? The recommended vaccination schedule for hepatitis B is newborn baby in India at birth. At birth में हम जो है वो hepatitis B देते हैं 6 week and 10th week ऑफ द बेबी जो है उसको है हेपेटाइटिस बी की जो है वैक्सीनेशन होती है. प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन. देन क्वेश्चन नंबर 16. विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई ब्लड प्रेशर, प्रीटोनिया एंड एडिमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? The right answer is preeclampsia. Preeclampsia is characterized by the high blood pressure, proteinuria, presence of excess protein in urine. ठीक है, proteinuria जो है वो क्या होता है आपका? presence of excess protein in urine and edema जिसको हम swelling बोलते हैं during pregnancy. It required close monitoring and may lead to complication it if left untreated. अगर इसको जो है वो complications दे सकता है अगर इनको ट्रीटमेंट ना दिया जाए, अगर इन कंडीशंस को edema और जो है आपका proteinuria को. Then question number 17. रिकमेंडेड पोजीशन फॉर अ वुमेन रिसीविंग एपिड्यूरल एनेस्थीसिया ड्यूरिंग लेबर? तो कौन सी पोजीशन होनी चाहिए? द लैटरल पोजीशन. लैटरल पोजीशन रिकमेंडेड फॉर द वुमेन रिसीविंग एपिड्यूरल एनेस्थीसिया ड्यूरिंग लेबर. इट हेल्प टू एंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया एंड प्रिवेंट स्पाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम. देन क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज द एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन इफ अ वुमेन एक्सपीरियंस अ सडन गश ऑफ अ क्लियर फ्लूइड फ्रॉम द वजाइना? तो क्या होना चाहिए आपका एक्शन? द एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन of if a woman experience a sudden gush of clear fluid from the vagina is to notify the healthcare provider immediately. It may indicate the rupture of membranes. And then question number 19. What is the recommended duration of excessive breastfeeding in India? The recommended duration of excessive breastfeeding in India is 6 months. After 6 months, complicatory food should be introduced while continue breastfeeding until at least 1 year. ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो 6 मंथ तक जो है वो कंटिन्यू करनी चाहिए. देन जो है उसके बाद उसमें और फूड भी जो है वो इंट्रोड्यूस करने चाहिए जिसमें कि अदर सप्लीमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिशनल डाइट होती है. ठीक है, और जो है वो आपको ब्रेस्ट फीडिंग भी साथ साथ 1 year तक कंटिन्यू रखनी चाहिए. देन है आपका क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ एपीगार स्कोर असेसमेंट? एपीगार स्कोर आपने सुना होगा जो क्या होता है आपका बार्डन स्केल होता है, उसके बाद में आपका जो होता है ग्लास्कोकोमा स्केल. इसी तरह से आपका एपागर जो है वो स्कोर असेसमेंट होती है, इसको हम स्केल भी बोलते हैं एपागर स्केल, जिसमें कि हम क्या मेज़र करते हैं? द प्राइमरी पर्पस ऑफ एपागर स्कोर असेसमेंट इज़ टू असेस द इन्फेंट ओवरऑल हेल्थ एट द बर्थ. इट evaluate द बेबी हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी एफर्ट, मसल टोन, रिफ्लेक्स, इरिटेबिलिटी एंड कलर. ओके, देन question number 21. Which condition is characterized by the excessive vomiting during pregnancy leading the dehydration and weight loss? And the right answer is hypertensive gravidarum.
It is characterized by the excessive vomiting during pregnancy, leading to dehydration and weight loss. It requires medical intervention and manage fluid and electrolyte imbalances. Then question number 22, what is the recommended position for a woman during the second stage of labor? Right answer is the upright position is the recommended for the woman during second stage of labor. It promotes the effective pushing and facilitates descent of the baby. Then question number 23, what is the recommended frequency of an antenatal visit for low risk pregnancies in India? Option A is the right answer. The recommended frequency of antenatal visit for a low risk pregnancy in India once every month until the third trimester, then twice a month. These allow regular monitoring of the pregnancy. Then question number 24, which condition is characterized by the abnormal position of the placenta, partially or completely covering the cervical opening? The right answer is placenta previa. Placenta previa characterized by abnormal positioning of a placenta, partially or completely covering the cervical opening. It may lead the bleeding during pregnancy. Then question number 25, what is the appropriate nursing intervention for newborn experience Mcqs application syndrome? The right answer is the appropriate nursing intervention for a newborn experience meconium aspiration syndrome is to suction the newborn mouth and nose. This help to remove any meconium present and ensure airway patency. ठीक है, जिसमें कि नोज़ और जो माउथ है बेबी का उसको क्लियर करते हैं, जिससे कि जो कि उसके मिनिकम एस्पिरेशन जो है वो सिंड्रोम होने से उसको बचाया जा सके. क्वेश्चन नंबर 26, विच कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय प्री लॉन्ग एंड सब वॉमिटिंग डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हाइपरमेसिस ग्रेवियार्डियम. ठीक है, hypertensive gravidium is characterized by a prolonged and severe vomiting, dehydration and electrolyte imbalance during pregnancy. It required medical intervention for the management. Then question number 27, what is the recommended position for the woman during the third stage of labor, delivery of the placenta? The right answer is option A, the supine position is recommended for the woman during the third stage of labor, delivery of the placenta. It allows for easy assessment and management of the placenta. In question number 28, what is the primary purpose of प्रोटोग्राफ इन लेबर मैनेजमेंट? प्राइमरी पर्पस क्या है प्रोटोग्राफ का? ठीक है, जिसमें कि आपकी लेबर मैनेजमेंट की जा सके. द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रोटोग्राफ इन लेबर मैनेजमेंट इज टू रिकॉर्ड द प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड फैसिलिटेट टाइमली इंटरवेंशन इफ नेसेसरी. Then question number 29, which condition is characterized by the severe abdominal pain, missed menstruational period or positive urine pregnancy test with the presence of an embryo outside the uterus? Option C is the right answer. Asymptomatic pregnancy is characterized by a severe abdominal pain, missed menstruational period or positive urine pregnancy test with the presence of an embryo outside the uterus. It requires immediate medical attention. Then question number 30, what is the recommended method for umbilical cord care in newborn in India? ठीक है, ड्राई कॉर्ड केयर. इट इज़ a recommended method for umbilical cord care in newborn in India. It involves keeping the cord clean and dry without applying any substance. Question number 31, what is the primary purpose of बिशोप स्कोर असेसमेंट इन लेबर मैनेजमेंट? ठीक है, वो है आपका द प्राइमरी पर्पस ऑफ बिशोप स्कोर असेसमेंट इन लेबर मैनेजमेंट टू एलिवेट द मदर readiness for a labor induction by assessing the cervix ripeness. Then question number 32, which condition is characterized by the present high blood pressure after childbirth? Right answer is option B, preeclampsia. Preeclampsia is characterized by the persistent high blood pressure after childbirth. It required careful monitoring and appropriate management to prevent complications. Question number 33, what is the recommended position for women during the administration of an episiotomy? The right answer is option D, lithotomy position. The lithotomy position is recommended for a woman during the administration of episiotomy. It provides optimal access to healthcare provider to facilitate the procedure. Then question number 34, what is an appropriate nursing intervention for a woman experiencing uterine anatomy and excessive postpartum bleeding? The right answer is option A, administered oxytocin medication. The appropriate nursing intervention for women experiencing uterine anatomy and excessive postpartum bleeding is to administer oxytocin medication. Oxytocin medication help stimulate uterine contraction and reduce bleeding. Okay, then question number 35, which condition is characterized by a implantation of placenta in the lower uterine segment, partially or completely covering the cervix opening? Placenta previa. Then question number 36, recommended method for pain relief during labor in India. ठीक है, non pharmacological techniques
are the recommended for pain relief during labor in India. These techniques include breathing exercise, relaxation techniques, massage and position changing. ठीक है. Then question number 37, what is an appropriate nursing intervention for newborn with a minimum sustained amatomic fluid? The right answer is option D, suctioning the newborn mouth and nose. Then question number 38, the recommended position for women receiving a spinal anesthesia during cesarean, the sitting position. Recommended for the woman receiving a spinal anesthesia during cesarean. It allows proper administration of anesthesia and reduce the risk of complications. Question number 39, primary purpose of a rubella vaccine given to pregnant women in India. Primary purpose क्या है उसका? To prevent the congenital rubella syndrome in newborn. Rubella infection during pregnancy can lead a subfetal complications. Then question number 40, which condition characterized by the abnormal adherence of a placenta to uterine wall? Option B is the right answer, placenta arrecita. Placenta arrecita is characterized by the abnormal adherence of placenta to uterine wall. It may lead to complications during delivery and require a careful management. And question number 41, what is the recommended method for newborn temperature regulation immediately after the birth? Skin to skin contact with the mother, also known as a kangaroo care, is the recommended method for newborn temperature regulation immediately after the birth. It helps them maintain the baby body temperature. Question number 42, what is an appropriate nursing action if women experience a nodule cord during delivery? The appropriate nursing action if women experience a nodule cord during delivery is to slip the cord over the baby head during delivery. This prevent cord comprehension and ensure the safe delivery. Then question number हमारे पास है यहाँ पर आपका 43. What the recommended method for a postpartum contraceptive used in India? Intrauterine devices are the recommended method for postpartum contraceptive used in India. They are safe, effective, and provide long-term contraceptions. Then question number 44, what is the primary purpose of the antenatal corticosteroid administration during pregnancy? The primary purpose of antenatal corticosteroid administration during pregnancy is to promote a fetal lung maturity. It helps to reduce the risk of respiratory distress syndrome in preterm infants. Then question number 45, what is the recommended method for newborn resuctioning immediately after the birth? Initiating positive pressure ventilation is recommended method for newborn resuctioning immediately after the birth. It helps establishment of effective breath and oxygenation. Then question number 46, which condition is characterized by the premature separation of the placenta from the uterine wall? Placenta abortio is the right answer. Then question number 47, appropriate nursing intervention for newborn with a cleft lip and cleft plate. Cleft lip और cleft plate आपने जो है वो पढ़ा होगा, ठीक है. Then the appropriate nursing intervention for newborn with a cleft lip and plate is provided emotional support to the parent and refer the newborn for surgical correction, feeding intervention, and may vary depending on the individual situation. What is the recommended method for postpartum perinatal care in India? Cleanliness with warm water and mild soap is recommended method for postpartum prenatal care in India. Then question number 49, what is the primary purpose of a non-stress test during antenatal care? The primary purpose of non-stress test during antenatal care evaluate the fetal well-being and activity. This assess the baby heart rate and response to its own movement. Question number 50, which condition characterized by the high blood pressure, proteinuria and edema during pregnancy? Then उसको हम क्या बोलते हैं? Preeclampsia. It is characterized by the high blood pressure, proteinuria and edema during pregnancy. It required close monitoring and leads the complication if left untreated. Which hormone is responsible for initiating contraction during labor? Oxytocin. Oxytocin is a hormone produced by a posterior pituitary gland and stimulate the uterine contraction during labor. What is the normal duration of the first stage of labor? 10 to 12 hours is the first stage of longest stage and typical least around 10 to 12 hours of a primigravida, a woman giving birth for a first time, and a shorter for a
Multipara, a woman who has given birth before. Then question number 53, which maneuver is used to relieve a shoulder dystocia during pregnancy? The correct answer is MC Robert maneuver. Then question number 54, normal fetal heart rate 120 160. Then primary purpose of Abigail's cure. Primary purpose क्या होता है इसका? Evaluate the newborn physical condition. Abigail is a quick assessment tool used to evaluate the overall health of newborn immediate after the birth based on heart rate, respiratory effort, muscle tone, reflect irritability and color. Question 56, position suitable for women to present occipital posture position during the labor. Hand and knees position. Hand and knees position, also known as a all fours, can help to rotate the baby head from the occiput posture position to anterior position of facilitating delivery. Then which of the following is a sign of placenta suppression? The correct answer is option D. Lengthening of an umbilical cord after the delivery of a baby, placenta separate from the uterine wall, causing the umbilical cord to lengthen. This is a sign of a placenta suppression. Question number 58, which medication is routinely administration to newborn prevention of ophthalmic nanotorum? Then the right answer is erythromycin ointment. Erythromycin ointment is applied to eyes of newborn to prevent a ophthalmia nanotorum, which is an eye infection caused by a Neisseria gonorrhea and a Chlamydia trachomatis. ठीक है, इन तीनों से जो आपको बच्चों की जो वो आईज़ काफ़ी ज़्यादा बंद हो जाती हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट. Which is a recommended position for a woman during a lumbar epidural anesthesia procedure? Sitting and cradled on the side is recommended position for women during a lumbar epidural anesthesia. In sitting or cradle on the side, which help to open the intravertebral space for a needle insertion. Question number 60, stage of labor include the delivery of the placenta. Third stage is the beginning after the birth of baby and ends with the delivery of the placenta. Normal amniotic fluid index, ठीक है, 10 to 14 centimeter. The normal range of an amniotic fluid index AFI is 10 to 14 centimeter, and AFI below 5 centimeter or above 25 centimeter may indicate abnormalities. Which position recommended for women during contraction and active labor? Upright position, such as standing, walking or sitting, is recommended during the contraction in active labor or allows gravity to aid the descent of the baby. Which hormone responsible for maintaining uterine lining during the pregnancy? Then progesterone. Progesterone is a hormone produced by a corpus luteum in ovary and later by the placenta. It helps to maintain the uterine lining and a support pregnancy. Question number 64, which type of anesthesia is commonly used in cesarean section deliveries? ठीक है, वो करते हैं कौन सा? स्पाइनल एनेस्थीसिया. स्पाइनल एनेस्थीसिया इज कॉमनली यूज्ड फॉर सिजेरियन सेक्शन डिलीवरीज एज इट प्रोवाइड एनेस्थीसिया एंड एनाल्जेसिस फॉर द चेस्ट डाउन to the toes, allowing women to awake during the procedure. And then question number 65, maneuver performed assess the fetal presentation and position. Leopold maneuver is a systematic examination of pregnant woman abdomen, determine a fetal presentation, position and engagement. Question number 66, condition is characterized by an abnormal implantation of placenta in the lower uterine segment. The correct answer is placenta previa. Then average duration of the second stage of labor, primigraviard, then 30 to 60 minutes. The second stage of labor is also known as a pushing stage, typically lasts around 30 to 60 minutes for a primigravidia. Then condition characterized by excessive vomiting during pregnancy. Hyperemesis gravidarum, ठीक है, is a condition characterized by a serve and a present nausea and vomiting during the pregnancy, leading to dehydration, weight loss and electrolyte imbalance. Question number 69, recommended duration for a delayed cord clamping after the birth, 1 to 2 minutes. Delayed cord clamping involves waiting 1 to 2 minutes after the birth before clamping and cutting the umbilical cord, allowing the increased transfer of a blood from the placenta to newborn. Then question number 70, what is the purpose of a biohope score of labor assessment? Purpose क्या है biohope score का? Determine the cervical dilation is a bioscope score, systematic used to assess the readiness of the cervix for labor and predict the likelihood of successful indication. Question number 71, position recommended for women of second stage of labor is a present occupied posture position. Then the option D is the right answer, squatting position. Squatting position can help open up the pelvic outlet and encourage the rotation of baby in the occiput posture position and anterior position during the second stage of labor. What is the purpose of an Ferin test?
Confirm rupture of membranes. The Fearon test is a microscopic examination of an amniotic fluid to confirm the rupture of membranes. A positive Fearon test indicate that presence of amniotic fluid. Question number 73. Position recommended for women undergoing external capital version. The right answer is left lateral position. Left lateral position is recommended for a woman undergoing external capital version ECV and improve the placenta blood flow to reduce the risk of supine hypotensive. Then question number 74. Medication used to induce labor and strengthen the contraction. Misoprostol. Misoprostol is a medication commonly used to induce labor the strength contraction. It is an along a prostaglandin E1 and help to repain the cervix in the initiate contraction. Question number 75. Which condition is characterized by the high blood pressure, proteinuria and edema during the pregnancy? Preeclampsia is the right answer. Question number 76. Which medication is routinely administered to newborn to prevent a hemorrhagic disease of newborn? Correct answer is vitamin K injection. Vitamin K is routinely administered to the newborn as an intramuscular injection to prevent the hemorrhagic disease of newborn, which can result of the vitamin K deficiency. Recommended interval between the birth of twins during the vaginal delivery: 1 to 2 minutes. In a vaginal delivery twins, it is recommended to deliver a second twin within 1 to 2 minutes after the birth of a first twin, maximize the risk of complications. Question number 78. Condition characterized by a premature separation of placenta from the uterine wall, placenta abortion. The normal range of heart rate आपको मैंने बताया 120 to 160. Characterized by the presence of Mcqs in amniotic fluid. Mcqs sustain amniotic fluid, okay, occurs when the baby passes Mcqs, the first stool, into the amniotic fluid before during the birth, which may indicate fetal distress. Question number 81. Purpose of an nitrazine test. Purpose क्या है इसका? Confirm rupture of membranes. Nitrazine test is a simple test used to confirm the rupture of membranes by detecting the presence of amniotic fluid, which turn the nitrogen paper blue. Then which maneuver is used to assist the delivery of fetal head during the vertex presentation? Then question number Rettigin maneuver involves applying upward pressure to a fetal chin while supporting the perineum during the delivery of a fetal head of a vertex presentation. Question number 83. Which vaccine is routinely administered to the pregnant woman to prevent influenza? Influenza vaccine is the right answer. Question number 84. Recommended interval between the administration of oxytocin for a labor augmentation: 3 to 4 minutes. Then question number 85. Maneuver performed to assess the descent of a presenting part during the labor. Right answer is option D. Rubin maneuver. Rubin maneuver is used to assess the descent of presentation part by applying genital downward pressure on the maternal abdomen while the simultaneously palpating and presenting part. तो ये थे आपके टोटल 85 क्वेश्चंस, ठीक है, ऑन ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग एंड होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। कुछ एमसीक्यूज़ अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए सो सॉरी, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रख दीजिए, हम उसको पिन कर देंगे। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी वीडियोस एमसीक्यूज़ वाली देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हम पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। हमसे अगर कुछ पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं आप लोग तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे साथ जो है वो आप टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।